तेरे प्यार में सारा खो बैठा। चलो लाइव हो चुका है फटाक से रिकॉर्ड। आज थोड़ा इंटरनेट हल्का सा स्लो है, थोड़ी लेटेंसी देखने को मिल सकती है। जय श्री महाकाल। तो आज हम खेलेंगे किसी पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेंगे किसी टूर्नामेंट में। एंड ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा मेजर इवेंट टाइप। ओनली देर इज अ रैपिड एरिना। 10 मिनट है। 1 सेकेंड, लेट मी जॉइन एंड चेक। 10 मिनट बचा है। ओके। 10 मिनट रैपिड एरिना है बट आई डोंट सी रेटेड प्लेयर्स ना था, बट ठीक है। लेट्स प्ले वन गेम एंड आई विल, क्योंकि मैं जीत भी जाता हूँ तो मुझे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई डोंट प्ले इन दोस एरिना। अभी मैं रोल ओपस खेल रहा हूँ। इट्स द मोस्ट बिगिनर्स ओपनिंग एंड स्टैंडर्ड ओपनिंग। जब आप स्टार्टिंग में चेस खेलना सीखोगे ना, तो रॉयल ओपस एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इट्स अ वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर। पीसेस को ज़्यादातर सेंटर में रखते हैं, जल्दी कैसल कर लेते हैं। पुट योर रूक टू E1, ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। किंग के साथ अलाइन करो। Play d3, have a good game, open up your bishop. Whenever your bishop is attacked, just go back to a4. b5, just go back to b3, bishop b3, and you will have a nice diagonal for your light square bishop. Okay. He wants to castle long. d4, pawn takes g4, knight takes g4, knight takes g4. Hmm. I can open the center right now. Like, why not? If he castle long, then I will just play d5. Actually, d5 is not a good way of playing. I should take and then open up my queen in some of those lines. But his dark square bishop is very passive. It doesn't have moved from its original position. इधर ले आता है तो मुझे पता लगता रहेगा कि किसने मुझे, यार मुझे ज्वाइन नहीं करना था। ड्रॉ में मेरी -8 रेटिंग हो जाएगी एंड हारने पर -16। The opponent is 600 rating lower than me. हमारा आइडिया बड़ा सिंपल है। डार्क स्क्वायर बिशप को हमको लाना है गेम में, एंड वंस ही स्टार्ट्स कैसलिंग आई विल गो a3 एंड d4, playing b5 and then just opening up the picks. Fine, takes. We can take here, no problem. We have knight takes. Also, we have a in between move that is.
this the castle, we can even throw in knight b6. Knight b6 बड़ा knight का sacrifice होगा, but it's too early for it. We can just stick with this plan. अगर वो कैसल नहीं करता है बस उसको कैसल करना पड़ेगा. जिस तरह से वो टाइम वेस्ट कर रहा है, आई मीन ही इज अफ्रेड ऑफ द रेटिंग. ज़्यादातर अपोनेंट्स में होता है कि व्हेन दे सी समवेयर हायर रेटेड अपोनेंट, दे स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, दे स्टार्ट सीइंग घोस्ट. एंड yeah, here he starts seeing ghost. He wants to trade, but if I can go here, there's not. Not a problem for me. I can just. Hmm, should I go there or not? Let's try. Let's try. D5 is the best move in this position. If he plays G5, he will have a strong game. He will win back his pawn at least. D5 आ रहा है, पिन हो जाएगा मेरा knight and queen. But then queen c6 आ रहा है. Queen c6 check and I will pick up his rook. And he does play d5. Hmm. d5 से दो बेनिफिट ये हुआ कि उसका ये खुल गया एंड बिशप ओपन अप हुआ एंड ऑल्सो ही इज अटैकिंग e4 राइट नाउ. इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए. Also he is protecting this pawn. Come back. Now we are happy with the trade. We can take the pawn, but right now his queen is hanging, so he has to do something in order to protect the queen. He can exchange it and play d5, d4, but it will be an equalish position where I have a good experience playing this kind of positions at the top level. देखो ये डायरेक्ट डिसीजंस होते हैं. अगर तुम इनमें 1 मिनट से ऊपर वेस्ट करोगे ना, एंड सिंस देयर इज नो इंक्रीमेंट इन दिस टूर्नामेंट्स, यू विल एंड अप लूजिंग क्रूशियल टाइम. क्योंकि एंड गेम में कभी कभार ऐसी पोजीशन आ जाती है वेयर यू नीड एटलीस्ट सम टाइम टू नो प्ले द प्रिसाइज मूव, वेयर इज ओनली 1 or 2 moves are available to hold the game. Hmm. So my buddy played this. Hmm. Interesting, interesting. I'm thinking of going here, but then this move is stuck in. Hmm. Doesn't look like a good position for me. Go this way. Let's go here. Playing fast but not blundering anything.
हमेशा अपने पीसेस को पहले एक्टिव करो। हमेशा याद रखो, यहाँ पर मैंने एक्सचेंजेस बहुत कर लिए एक्चुअली, जिसकी वजह से थोड़ा सा इजी हो गया ब्लैक के लिए मूव्स लेना, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कांट जस्ट प्ले लाइक कैसल, लॉन्ग कैसल डायरेक्टली नहीं खेल सकता। वो खेल सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स बेस्ट मूव इन दिस पोजिशन। यू शुड ब्रिंग अप योर बिशप here. You can even play b5, and I want him to play b5 so that my knight got trapped. Oh no, my knight. Hmm. Okay, now that's a problem. If I harass his queen now, his queen will just come here and attack this poor knight, which I don't want. There's one idea I have, and that's what I don't want to complicate this position. Okay. Knight literally has no squares right now. b3. b3, d3, bishop b2. Now I too have to play fast. अगर मैं जल्दी नहीं खेलूंगा तो मेरी दिक्कत लग जाएगी। मुझे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। वंस आई विल प्ले c3। c3 से अच्छा है कि आई विल जस्ट पुट माय rook, this rook over d1, rook a d1, and then try to pressure this pawn. Once I will exchange this pawn for this pawn, I will have a semi-open c5, and I will just double up my rooks like this or like this, whatever seems good to me. I will have a pressure using this queen. Hmm, that's not a good move. This. Let's move. So many plans. At least he gave me a rook lift by playing bishop b4. Dono de Pravia. Dono de Pravia. It's a Spain, right? Yeah, Spain. Spain का बंदा स्पेनिश खेल रहा है। स्पेनिश लैंड Lopez. Okay.
Knight is attacked. Let's come here, play this. Hmm. भाई के पास टाइम भी नहीं है। This game, I don't want to play any other game from this arena because I will just going to lose my rating. Bro, look at this. 431 rated player is having a streak of 34. Hmm. तो अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने गेम को इम्प्रूव करें। सबसे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत पता हो चेस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। आप जब भी अदर्स में जाओगे ना, यहाँ पे आपको
गेम्स का डाटाबेस मिलेगा, चेस टर्म्स मिलेगी। चेस टर्म्स पे जाना, आपको एक थ्योरी मिलेगी चेस टर्म्स की। पता चलेगा कि होता क्या है इसमें, अलग अलग चीज़ें, रुक्स क्या होते हैं, बाग हाउस चेस क्या होता है, और अलग अलग वेरिएशंस भी मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक मेटिंग है कि रुक से कैसे मेट कर सकते हैं। बैक रैंक मेट क्या होती है, अनदर टाइप ऑफ चेकमेट इज अ रुक नरिंग फॉर द बैक रैंक मेट। एंड डबल रुक मेट क्या होता है, व्हेन यू हैव डबल रुक, लाइक एक के ऊपर एक जब आप रुक को रख लेते हो, इट्स अ डबल रुक। तो ये जो टर्म्स है आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। Double rooks as an open file can be used to attack the enemy pieces. Here, white's rook on d2 is attacking the knight on d5. If you see this d2 rook is attacking the knight on d5. If you want to create more pressure on it, you have to place another rook to d1 so that it will create a battery. Once this rook will create a battery, it will have a power of 10, and it is only be defended by power of 5, which is single rook. So it's very difficult to protect this knight. Once you move your knight, you will lose the rook, and you are going to lose your knight anyway. Another good concept is rook on the seventh rank. While while playing endgames, or even in the middle game, in some of in majority of the positions, once your rook gets an open file, try to place your rook on the seventh file where it won't be attacked. Simultaneously, it will create a stoppage for the opponent king to not have sufficient moves. This is a very important, like it is a very strong, it is a very strong position for the white, because black king is not able to get out very quickly. He has to play somewhere like h6 and then try to bring out the knight king this way. But meanwhile, the rooks will be very easily capture this pawns. ये देखो यहाँ पे टेस्टिंग पजल्स भी है, तो आप टेस्टिंग पजल्स भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये पोजीशन है, यहाँ पर मैं नाइट मार दूंगा, सो दिस इज सॉल्व। सिमिलरली, दिस इज अ बैक रैंक मेट, रुक को आखिरी में लाएंगे, इट्स अ चेकमेट। Why can white's rook on c1 move to c8 square, like this to this? Also, we can double up the rooks. Can white double rooks? Can white bring the rook into the seventh rank? Yes. Can white bring the rook to the seventh rank? Yes. Why yes? Because you have protected the king from checkmating itself on the back rank. So this is a way to do it. Also, there are multiple chess pieces. If you click on explore more chess pieces, you can just see how the chess pieces will move. You can go through the pawn. I think the pawn is the first thing you have to look into after rook, because it is it has the minimum value, but सबसे ज़्यादा एक चेस पीस में पॉन्स ही होते हैं. There are 8 pawns in the game. Now you can see it's the first line of defense, also the first line of attack. So if the pawn is the least powerful piece and it's worth 1 point. If it is a pawn's first move, it can only move forward 1 or 2 squares. Okay. In some situations, like once it is on the starting line of defense, it can move
two squares and one square depending upon your own choice. Yeah, the pawn attacks the two squares, which is diagonally diagonally opposite, and then you have bishops. Bishops can go in all the directions. Direction means tangential directions. Bishop can, so it's a minor piece and it's worth 3 point. A bishop can move diagonally as many squares as it likes until and unless it is blocked by its own pieces or occupying in a square, just like this. So it's a perfect example of a bishop placed at the center. Then we have knight. Knight is very tricky to understand. Now, why it is so? Because knight plays like an L shape, just like this L. Now, this L can be rotated in multiple ways. You can rotate your L in this way. You can rotate this L in this way. You can rotate it in this way. I have shown it four ways. You can rotate in four more ways that I have seen. Like I have done four ways from the right, left hand. I can do the same with the right hand as well. So it's a four move and four moves. So there are eight moves. Possibly a knight can move into any position. This is the best example of it. So it's one, two, half, one, two, half, one, two, minus half, one, two, half, one, two, half. So जनरली हिंदी में बोलते हैं कि ये ढाई चाल चलता है, बट इट एक्चुअली मूव्स लाइक एन एल शेप. अगर आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ोगे, ईच साइड ऑफ द नाइट विद each side starts with a 2 knight, and when the game starts where knights are located in b1 and g1 position while black's knights are located on b8 and g8. A minor piece and it's worth 3 point. The कोई कहता है थ्री पॉइंट्स का नाइट है, कोई कहता है कि 2.5 पॉइंट्स नाइट है बिकॉज नाइट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, फलाना ढिंगाना. ऑल्सो बिशप का एक एडवांटेज रहता है कि इट कैन मूव थ्रू आउट द, इट हैज़ अ रेंज इट कैन गो टू. नाइट की वो रेंज नहीं है, एक लिमिटेड स्क्वायर्स पे वो जा सकता है. बट नाइट ऐसा इकलौता पीस है जो एल शेप में मूव करता है. बाकी पीसेस एल शेप में कोई मूव नहीं करता. So it's a benefit of having a knight. आप डेफिनेशन में देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. द नाइट इज एन ओनली पीस इन द चेस दैट कैन जंप ओवर अनदर पीस. इट मूव्स वन स्क्वायर लेफ्ट or right horizontally and then two squares up and down vertically, or it can move two squares left and down horizontally and one or two square up and down vertically. तो जब आप, yeah, so basically the knight moves in a L shape. That's the simplest definition. If anybody asks you कि night किस तरह मूव करता है, you just say night moves like an L shape where you can when you can where you can orient L in different ways, like different directions. So there are eight ways maximum a knight can move in a single turn. Going towards rook, we already discussed it goes straight, vertically upward and downward, and horizontally. Yes, horizontally आगे पीछे होता है. Queen, it's a combination of rook and bishop. It can go upward, downward, left side, and right side, as well as diagonally from its own position. At the last, we have king. King only moves one square, it just to its adjacent square. It doesn't mean it's horizontal, it's sideways, wherever it wants to go. It can go, but just move one move at a time. It can go to this move in eight moves. So if someone asks you, uh, in how many moves a king can cover a board, now what I mean to say, if a king is placed on a1 and it wants to go to h8
how many moves it should actually take. So minimum it should take one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 moves to go from one position to another. If you are removing the king is on a1, so this is one way of understanding it. Try to बस थोड़ा सा से चेक कर लो कि कैसे करता है काम, कंक्लूजन देख लो। इसको अगर आप आधा घंटा भी से देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीसेस किस तरह से मूव करता है। देन अगेन यू गो टू दिस others and we have these rules. So if you are new to chess, बिल्कुल नए नए आए हो, then you can first check the rules after getting understanding about how the pieces moves, what are their names. First thing is about setup the chessboard. So always consider one thing. On your right hand side, the first square you will see has to be a white square, which is this one. You see, it shouldn't be black. If you are having a black square on your right hand side and it's just the first square on the right hand side, then it means that you have positioned your chessboard in a wrong way. So always place your chessboard in the right way. Then this is the way of arranging the pieces. Put up the pawns, then put up the rooks on the sideways, put up the knights on the B and G file, bishops on C and F file, and king and queen. Always people have confusion. अभी भी बहुत लोगों में होता है कि वो king and queen को opposite रखते हैं. Opposite in the sense किंग को रखते हैं, वाइट किंग को हमेशा डार्क स्क्वायर पर रखते हैं एंड ब्लैक किंग को हमेशा लाइट स्क्वायर पर रखते हैं because it's a starting of the war and you wanted to gain the territory of the opponent pieces. That's why the king has to be placed on the opposite color of its own piece. So that's how the thing is. I'm just posing it. I will be right back in some time. Cancel.